At 61, Melissa Gilbert is finally breaking her silence, revealing heartfelt truths that have remained hidden for decades. For years, the world saw her as the sweet, wide-eyed half-pint who grew up on our television screens, a living piece of Americana. But behind the warmth of her smile and the glow of her stardom lay layers of untold stories, lifelong connections and unforgettable bonds, including her meaningful relationship with Patty Duke, one of the most respected actresses of her time. Melissa Ellen Gilbert entered the world on May 8, 1964 in Los Angeles, California. Her path in life was shaped from the moment she was adopted by actor and comedian Paul Gilbert and his wife, Barbara Crane. Growing up in a family deeply connected to the entertainment industry meant that Hollywood wasn't just a dream. It was her backyard. Surrounded by cameras, scripts, and seasoned performers, Melissa developed an early fascination with acting and storytelling. Her childhood wasn't the typical upbringing most kids experienced. Instead of playing in neighborhood parks, she often found herself on studio lots watching magic being made. She was a bright, curious child who loved performing for anyone who would watch. From school plays to commercials, she stepped into the spotlight naturally and fearlessly. But even at a young age, she was aware that Hollywood could be both glamorous and challenging. It was this unique environment, a mix of opportunity, expectation, and early exposure that prepared her for the career-defining moment that would soon change her life, forever. Melissa Gilbert's life changed dramatically. At the age of 9 when she landed, the role that would make her a household name. Laura Ingalls Wilder on the hit series Little House on the Prairie. Premiering in 1974 and running until 1983, the show was based on the beloved books by Laura Ingalls Wilder. It told the story of the Ingalls family as they navigated the hardships and joys of pioneer life. From the very first episode, Melissa captured hearts around the world with her portrayal of Half Pint, the affectionate nickname given to her character by Charles Ingalls, played by Michael Landon. Her performance was natural, emotional, and deeply authentic. She didn't just act, she lived that role, embodying innocence, determination, and love. Audiences connected with her sincerity, and week after week, millions tuned in to watch her grow up before their eyes. For a child actor, it was a massive responsibility, but Melissa handled it with grace. The role not only catapulted her into international fame, but also created lifelong bonds with her co-stars. Little House became one of television's most enduring family dramas, and Melissa stood at its heart. After the success of Little House, Melissa Gilbert proved she wasn't just a child star, she was a force to be reckoned with. She seamlessly transitioned into a variety of roles that challenged her craft and showed the world her emotional range. One of her most powerful performances came in 1979 when she portrayed Helen Keller in The Miracle Worker, acting alongside Patty Duke, who played Anne Sullivan. The emotional intensity between them was palpable, and their on-screen chemistry remains a standout moment in TV history. Gilbert went on to star in numerous made-for-TV films during the 1980s, including Choices of the Heart, 1983, where she portrayed missionary Jean Donovan, a role that demanded maturity and depth far beyond her years. Each performance solidified her reputation as a talented and versatile actress capable of carrying powerful stories. Throughout the late 1970s and 1980s, Melissa became one of television's most recognizable faces. She wasn't just an actress, she became a symbol of strength, resilience, and heart. Her ability to shift seamlessly from sweet pioneer girl to complex adult roles demonstrated her evolution as an artist. By the time she reached adulthood, Melissa Gilbert was no longer simply Laura Ingalls Wilder. She was an accomplished star who had earned respect in an industry that isn't always kind to child actors growing up in the spotlight. Melissa's career did not fade as many expected of child stars. Instead, she reinvented herself time and time again. In 2001, she achieved a remarkable milestone by being elected president of the Screen Actors Guild, SAG. Her tenure, which lasted until 2005, marked her transition from actress to industry leader. As president, Melissa became a tireless advocate for actors' rights, fair contracts, and health care benefits.
At a time when the entertainment landscape was shifting with new technologies and platforms, she fought to ensure performers received the protection and respect they deserved. She spoke boldly, stood firm in negotiations, and proved that her influence extended far beyond the screen. This period showed the world a different side of Melissa Gilbert, a leader who was unafraid to stand up for thousands of performers across the nation. While many actors choose to quietly step back from the spotlight, Melissa stepped forward to shape the industry that had shaped her. It was a natural evolution for someone who had spent her entire life in front of cameras and behind the scenes. In 2008, Melissa Gilbert took her career to the stage, embracing live performance with the same energy she brought to television. She stepped into the role of Ma, Caroline Ingalls, in the musical adaptation of Little House on the Prairie, directed by Francesca Zambello. It was a full-circle moment for her. Years after playing Laura, she returned as the matriarch, bringing a new depth and maturity to the same beloved story. The world premiere took place at Guthrie Theater in Minneapolis, followed by a successful U.S. national tour in 2009. The production concluded in June 2010 at Starlight Theater in Kansas City, Missouri. Night after night, audiences witnessed Melissa bringing history and heart to life on stage. This theatrical chapter added a fresh dimension to her artistic journey, proving that her connection to Little House wasn't just a memory. It was a living legacy she continued to honor with every performance. Melissa Gilbert didn't limit her storytelling to acting. In 2009, she published her memoir Prairie Tale, an unfiltered and deeply personal account of her life in Hollywood. The book revealed the pressures of child stardom, her struggles with addiction, her triumphs, and the moments that shaped her identity. Fans praised her honesty, finding strength and inspiration in her willingness to share her truth. In 2014, she released My Prairie Cookbook, a heartfelt blend of family recipes and behind-the-scenes stories from her time on Little House. Through her writing, she created an intimate bridge between herself and her fans, giving them a glimpse into her private world and cherished memories. Her success as an author highlighted another layer of her creativity. She wasn't just telling stories on screen anymore, she was writing them down for the world to hold, read, and remember. Melissa Gilbert's personal life has been just as rich and layered as her career. In 1988, she married actor Bo Brinkman, who came from a prominent acting family. Their marriage was filled with passion, creativity, and the shared experience of life in the entertainment industry. In 1989, they welcomed their son, Dakota Paul Brinkman. Becoming a mother transformed Melissa's life, bringing both joy and responsibility. But like many Hollywood marriages, theirs faced challenges. After 6 years together, Melissa and Bo divorced in 1994. This period was difficult for her, but it also became a time of growth, resilience, and self-discovery. In 1995, love found her again in the form of actor Bruce Boxleitner, best known for his roles in Scarecrow and Mrs. King and Tron. The two shared a deep connection, blending their families and creating a home filled with love and laughter. They welcomed their son, Michael Garrett Boxleitner, named after her late mentor, Michael Landon. For over 16 years, their marriage stood as a cornerstone in her life. But even long unions can face storms. After years of ups and downs, Melissa and Bruce divorced in 2011. Still, through every heartbreak, Melissa emerged stronger. Her personal journey reflects not just love and loss, but the courage to keep moving forward and rebuilding. Today, she is married to Timothy Busfield. Their partnership is built on shared values, peace, and mutual respect. Away from the Hollywood hustle, she has embraced a simpler, quieter life, one centered around love, healing, and personal freedom. Behind the spotlight, Melissa Gilbert faced struggles that many never saw. Fame at a young age came with immense pressure, and over time she turned to alcohol to cope with the emotional weight of stardom, personal loss, and identity battles. She has been open about these struggles in interviews and her memoir, not to glamorize them, but to help others see that even beloved stars are human. Her journey toward recovery wasn't easy. It required her to confront her pain, rebuild her sense of self, and rediscover her strength. But she did it.
with honesty, therapy, and support from loved ones. She also faced health challenges over the years, including spinal surgery and lifestyle changes to prioritize her well-being. Through these battles, Melissa emerged not just as a survivor, but as someone who inspires others to heal. Her story isn't defined by her struggles, but by her triumph over them. Melissa Gilbert's legacy stretches far beyond the prairie. She remains a timeless symbol of strength, authenticity, and artistic dedication. Generations have grown up watching her on Little House, reading her memoirs, or seeing her fight for actors' rights. Her ability to transform pain into power has inspired countless fans. She may have started as a child actress in Pigtails, but today she stands as an accomplished actress, leader, writer, and survivor. Her journey with Patty Duke, Michael Landon, and the rest of her Little House family is woven into American pop culture history. And even now, she continues to live a life that reflects her values: simplicity, honesty, and resilience. Her story reminds us that the strongest people are often those who have walked through fire and come out with grace. साइज के बारे में सोसाइटी का परसेप्शन हमेशा एक सेंसिटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है। जब बात 8 इंचेस की होती है, तो इसे लोग अक्सर एग्जैजरेशन के साथ जोड़ देते हैं। मीडिया, पॉप कल्चर और सोशल प्लेटफॉर्म्स इस कॉन्सेप्ट को और भी मैग्नीफाई कर देते हैं। कई लोग समझते हैं कि 8 इंचेस किसी चीज का आइडियल साइज है, चाहे वो किसी ऑब्जेक्ट का हो या मेटाफोरिकल सेंस में इस्तेमाल हो रहा हो। ये परसेप्शन असल में फैक्ट्स पर नहीं बल्कि सोशल इमेजिनेशन और एग्जैजरेशन पर मबनी होता है। मूवीज, म्यूजिक और ऑनलाइन मीम्स में 8 इंचेस को एक इंप्रेसिव मेजरमेंट के तौर पर दिखाया जाता है। ये ही वजह है कि कई लोगों के ज़हन में ये एक बेंचमार्क बन गया है। मगर असल में हर इंसान का परसेप्शन अलग होता है। जो साइज एक कल्चर में इंप्रेसिव माना जाता है, दूसरे कल्चर में सिर्फ नॉर्मल समझा जा सकता है। इसे समझना जरूरी है कि कल्चरल नैरेटिव्स असल रियलिटी का एक हिस्सा नहीं, बल्कि उसका एक एग्जैजरेटेड वर्जन होता है। ऐसे टॉपिक्स को समझने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत होती है। जब हम कल्चरल स्टैंडर्ड्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो अक्सर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पैदा होती हैं। 8 इंचेस का कॉन्सेप्ट भी इसी कैटेगरी में आता है। लोगों के ज़हन में एक इमेज बन गया है, जो असल में सब पर अप्लाई नहीं होता। ये सिर्फ एक कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं। सबसे पहली मिसकंसेप्शन ये है कि 8 इंचेस कोई परफेक्ट या यूनिवर्सल साइज है। लोग इसे स्टैंडर्ड समझ लेते हैं, जबकि असल में साइज का परसेप्शन हर कल्चर, हर सोसाइटी और हर इंसान के लिए अलग होता है। कई दफा लोग ऑनलाइन देखी हुई एग्जैजरेटेड बातों को रियल लाइफ का स्टैंडर्ड समझ लेते हैं, और ये ही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। दूसरी मिसकंसेप्शन ये होती है कि 8 इंचेस हमेशा बेटर होता है। ये सोच साइकोलॉजिकल प्रेशर पैदा करती है, खासकर जवान लोगों में जो अपने आप का कंपैरिजन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से करते हैं। इस तरह का कंपैरिजन किसी को भी इनसिक्योर और कंफ्यूज्ड कर सकता है। रियलिटी में 8 इंचेस सिर्फ एक नंबर है, इसका मीनिंग हर कॉन्टेक्स्ट में मुख्तालिफ हो सकता है। तीसरी मिसकंसेप्शन ये है कि अगर कुछ 8 इंचेस का है, तो वो ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रॉर्डिनरी या सुपीरियर होगा। ये सोच लॉजिकल नहीं। साइज कभी भी किसी चीज की क्वालिटी का अकेला स्टैंडर्ड नहीं होता। बहुत सी चीजें छोटी होने के बावजूद ज्यादा फंक्शनल या प्रैक्टिकल होती हैं। इसलिए सिर्फ साइज पर डिपेंड करना किसी भी सिचुएशन में ठीक अप्रोच नहीं। मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए अवेयरनेस और रियलिस्टिक माइंडसेट जरूरी है। जब तक लोग इन मिथ्स को चैलेंज नहीं करते, तब तक ये कल्चर में चलती रहेंगी। जब किसी चीज को सोसाइटी में स्टैंडर्ड बना दिया जाता है, तो उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट लोगों पर जरूर पड़ता है। 8 इंचेस का नंबर सिर्फ एक मेजरमेंट नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए एक कंपैरिजन और प्रेशर का सिंबल बन गया है। इसका सबसे पहला साइकोलॉजिकल इफेक्ट इनसिक्योरिटीज का पैदा होना है। जब लोग अपने आप को अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। दूसरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है कि लोग अपनी सेल्फ वर्थ को नंबर्स के साथ जोड़ देते हैं। ये सोच इंसान को इमोशनली वीक और सेल्फ कॉन्शियस बना सकती है। कई लोग समझते हैं कि अगर वो इन स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतरता है, तो वो कम है, जबकि असल में ये सिर्फ कल्चरल नैरेटिव्स का असर होता है। तीसरा साइकोलॉजिकल असर सोशल एंजाइटी का होता है। लोग दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के प्रेशर में नेचुरल कॉन्फिडेंस खो देते हैं। ये एंजाइटी उनकी रियल लाइफ इंटरैक्शंस को भी इफेक्ट करती है।
मगर अगर लोग समझ लें कि 8 इंचेस सिर्फ एक आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड है, तो यह प्रेशर कम हो सकता है। सेल्फ एक्सेप्टेंस और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना इन प्रेशर्स को कम करने का बेहतरीन तरीका है। जब लोग अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो कल्चरल स्टैंडर्ड से आजाद सोचने लगते हैं। अगर 8 इंचेस को रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो ये सिर्फ एक मेजरमेंट है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी चीजों में देखते हैं। मिसाल के तौर पर, एक आम प्लेट का डायमीटर 8 इंचेस के करीब होता है। कई नोटबुक्स, टैबलेट्स और केक पेन्स भी इसी साइज के आसपास होता हैं। इससे ये बात समझने में आसानी होती है कि 8 इंचेस कितना होता है। किचन में अगर कोई शेफ का नाइफ या पेन का डायमीटर 8 इंचेस का है, तो यह एक स्टैंडर्ड और मैनेजेबल साइज समझा जाता है। फर्नीचर और होम डेकोर में भी इस मेजरमेंट का काफी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्रैक्टिकल और कॉमन साइज है जो किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए कन्वीनियंट माना जाता है। जब लोग साइज को रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो उन्हें इन समझने में आसानी होती है कि यह ना तो कोई बहुत बड़ा नंबर है और ना ही छोटा। 8 इंचेस का कॉन्सेप्ट एग्जैजरेशन से दूर होकर सिर्फ एक आम मेजरमेंट बन जाता है जो हर रोज की जिंदगी में दिखाई देता है। आखिर मेन बात यह समझना है कि हाई के 8 इंचेस का कॉन्सेप्ट सोसाइटी में एग्जैजरेशन के साथ डेवलप हुआ है। लोग इसे एक बेंचमार्क समझने लगता हैं, जबकि असल में ये सिर्फ एक मेजरमेंट है। ना इसका कोई यूनिवर्सल मीनिंग है और ना ही ये किसी चीज की क्वालिटी का फाइनल स्केल है। जब तक लोग इसे कल्चरल मिथ के तौर पर नहीं समझते, तब तक ये मिसकंसेप्शन सोसाइटी में बढ़ती रहेगी। रियलिस्टिक सोचने का मतलब ये है कि हम नंबर्स को सिर्फ उनके असल कॉन्टेक्स्ट में समझें। 8 इंचेस किसी ऑब्जेक्ट का साइज हो सकता है, किसी चीज का स्टैंडर्ड हो सकता है, लेकिन ये कभी भी किसी की वर्थ या इंपॉर्टेंस को डिफाइन नहीं करता। हर इंसान का परसेप्शन अलग है और हमें अपने परसेप्शन को मीडिया और कल्चर के एग्जैजरेशन से अलग रखना चाहिए। अगर हम रियलिस्टिक माइंडसेट अपनाएं, तो इनसिक्योरिटीज, मिसकंसेप्शंस और अननेसेसरी प्रेशर्स खत्म हो सकते हैं। 8 इंचेस को सिर्फ एक मेजरमेंट समझना ही सबसे हेल्थी और बैलेंस्ड अप्रोच है।